can hear me and see me clearly? Okay. So today we are going to move towards the advanced part of the options trading. And I welcome you all on behalf of Upstocks. And this is an endeavor that we are doing to impart education. And we want to give you this education so that the retail traders don't make the same mistakes again and again. And you can get some kind of academic understanding about what these options are. So I'm Dr. Chirag Shah, and I am a professor at many B schools in Mumbai. I teach the subject of derivatives. I've done my PhD on the subject of derivatives from Mumbai University, and I've been an options trader for about 15, 16 odd years. I've seen a lot of ups and downs in the markets, and I have navigated through all of that. So let's see if I can explain to you things that are complex in nature. And in this short course, we need to cover a lot of things, right? And one would always ask कि अगर ये इतना easy होता जो एक वीक में अगर सिखा सकते थे तो आपने इसमें 5 साल क्यों निकाला पीएचडी करने को? आंसर इज सिंपल कि वो सब किया है, इसीलिए ये बता सकता हूँ मैं. ओके, सो आई जस्ट हैव द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि आप मेरी गलतियों से कुछ सीखें. देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील, राइट? अगर आपने कुछ अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो सेम गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, राइट? ओके, मैंने की थी, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं की थी. ओके, सो द मोड ऑफ दिस course, okay, the language of this course is options, right? So यहाँ पे हम लोग options सीखने आए हैं. We are not here to learn English or Hindi or Gujarati. Okay, this is not our domain. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ options सीखेंगे. Alright? So whatever language I use, I can assure you कि जो मेरा communication है वो आप तक पहुंच जाएगा. ओके, मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान मत देना, बिकॉज वो लैंग्वेज कौन सा है दैट डज नॉट मैटर. सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है कि हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं. ओके, जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप सीख सकते हो कि नहीं. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव. एंड मैं यहाँ पे ना तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे अबाउट द व्हाट डू यू से द रिकॉर्डिंग, या सो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स ऐसा है कि वंस वी एंड द सेशन ओवर हियर, ओके, वंस द सेशन इज एंडेड फ्रॉम हियर, डेफिनेटली उसका 1 घंटा लगता है, आधा 1 घंटा, and then you will get the session. Okay, उसमें replay, you must have attended the basics course, तो obviously आपको ये पता ही होगा. Okay, so session is ended on time so that आपको recording भी. Okay, so just a quick recap about the that we did. Okay, in the basics what we did was we first of all understood कि इसके पीछे जो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. ओके, देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वी आर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स. तो
तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पीछे जब आप बोलते हो कि आई हैव बॉट अ कॉल ऑप्शन, व्हाट डज इट मीन? ओके, सो हमने वो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखा कि यू हैव द राइट टू बाय this underlying asset at this price on a future date. Now, because you have given a premium today, okay, you may or may not exercise your right to honor the contract. Okay, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि आपको एक प्रीमियम देके एक राइट मिलता है, एक हक मिलता है टू चूज ऑन अ लेटर डेट. अगर आपके हक में, आपके फेवर में ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको एग्जीक्यूट करो. अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको मत करो. राइट, सो ये जो है इस दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. राइट, सो हम यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है वो भी हमने इंडिविजुअली सीखा. देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज बाय कॉल, बाय पुट, सेल कॉल, सेल पुट. राइट, so all these things we have already understood. Right, yeah, so what is light mode? I don't know. Anyway, so जो भी है, आज आई एम नॉट एबल टू गो टू द स्टूडियो बिकॉज हमारे यहाँ बहुत ही रेड अलर्ट है अबाउट द मॉनसून. सो आई जस्ट had to do it from home. Okay, so please excuse me for that, but we'll try to start the session as soon as we can. जब मैंने आपको प्राइसिंग बताया था उसके लिए व्हाट वी डिड वाज वी टुक द एग्जांपल ऑफ द हाउस एंड उसमें हमने जो एग्जांपल लिए थे देयर आई शोड यू हाउ दिस impacting your option price, how these factors. So the factor we discussed was time, volatility, okay, में देखा था डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, वो सब देखा था. करेक्ट, so these are the three factors that affect your option price. All right, these are the only three factors that affect your option price. All right, see, I will not be able to scroll through all the क्या बोलते हैं आपके जो messages है. Okay, I will not be able to check them at the same time teach this. So I will focus on this. मैं ये सब बाद में देख लूँगा. Okay, good. So we had studied these three things in a very very basic manner. हमने घर का एग्जाम्पल लिया था, हमने बेसिक एग्जाम्पल्स लिए था 100 days, 30 days तो क्या होगा. फिर वोलाटिलिटी के लिए we had taken a place in somewhere in Jaipur and then in somewhere in Hyderabad and you know something like that. और मार्केट मूवमेंट में मैंने 3 जन का घर दिया था एंड यू नो उसके साथ एक स्पॉट मार्केट था and we had understood it from a very basic conceptual understanding. Now we need to move a little bit further because इस factor के अंदर when I was explaining that I had explained that there is something called intrinsic value. And there is something called time value. Okay, अब ये intrinsic value and time value. Now please understand that this time value is not supposed to be confused with this factor called time. Okay, अब ये समझ लीजिए कि ये जो टाइम वैल्यू है, अब ये जार्गन से ये मैंने नहीं बनाया है, तो इसको मैं बोलता हूँ this is the cost that you have to give to get the right
ओके, इसका कॉस्ट है. ओके, दिस टाइम वैल्यू is called the cost to get the right and not the obligation, the right to choose. All right, this is very very important. बस ये दो चीज अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो इसके सिवा और कुछ होता ही नहीं है ऑप्शन प्राइस में. करेक्ट. ओके, नाउ यहाँ पे then we had understood something called future plus put is equal to strike plus call. Okay, this is very very important. Okay, future plus put is equal to strike plus call. All right, this is a very very important formula because it talks about the relationship between the future, the put and the call of the same strike price. Okay, when you discuss derivatives, इतना समझ लीजिए कि ये तीन चीज अपने हिसाब से नहीं चल सकता. There is an underlying asset okay guys, please एक दिन के लिए please bear with us. Okay, we don't do it at home generally. Okay, एक दिन के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. We do it in a studio where we have everything. Okay, आज it was not possible for me to go to the studio and that is why we have to do it at home. अभी मेरे घर पे जितने resources है उसमें ही करना पड़ेगा. Okay, so please bear with me today. From tomorrow we will be in the studio. Okay, yeah. So underlying asset is the most important thing. इसी के ऊपर सब कुछ होता है. ओके, एंड अंडरलाइंग एसेट से इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है फ्यूचर, और फ्यूचर का डेरिवेटिव्स होता है ऑप्शंस. ओके, तो पहले हमें प्राइसिंग जब सीखना है, जब टेक्निकलिटी सीखना है तो हमें फ्यूचर का सीखना पड़ेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फ्यूचर्स एंड उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शंस पे. नाउ व्हेन वी हैड गिवन यू द शेड्यूल, ओके, उसमें कुछ टॉपिक के नेम्स लिखे होंगे, बट डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, वी विल कवर इट इन द कोर्स. अब कौन सा टॉपिक कब होगा ये सब आप मुझ पे छोड़ दो. ओके, as and when I think I should go to the next topic, I will go. All right. So अब हमारा जो काम है, पहले हमने फ्यूचर को समझना है from the underlying asset, and then we move to the options. Okay. So future is a contract in which you are supposed to oblige on both of them, right? So अगर आपने call buy किया है और future buy किया है, if you have buy a, let's say, Reliance future, okay, that means you have promised to buy 250 shares of RIL on, let's
let's say 31st of August, because I will not take 27th August, 27th July. Okay, 250 shares of Reliance on 31st August at the price which is prevailing right now, and that price may be somewhere around, let's say, 2600. I don't know. Okay, so बाय रिलायंस फ्यूचर, जब मैं खाली इतना बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. या फिर इधर मैं प्राइस लिख लेता हूं एट 2600. ओके, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू जस्ट से दिस, इसका मतलब ये होता है. ओके, एंड देयर यू डोंट हैव द राइट टू चूज. मतलब आपको बाय करना ही पड़ेगा. सो व्हेन द प्राइस इज whatever on the 31st August, आपको 2600 में ही बाय करना पड़ेगा. which means कि अगर प्राइस हो गया on the 31st August, if the price goes to 2800, okay, आपको